Yes, Safa, I did actually. There is a problem with my laptop, bache. So I'm taking classes from on the laptop. There is a Wi-Fi chip on every laptop, and my chip is not working, so I cannot use Wi-Fi over my this laptop. That is why I'm not able to send you those books. But I will send you Yeah, for sure. okay. I'm just within 1, 2, 3 days, I'll send you before the next class. It's fine. Okay. So we're just left with 2, 3 questions. Okay. Uh, After that, you can start asking me your doubts if you have any. So let's say, let's take one more question now, which is x plus 1. We have this function y, x plus 1 into cos x into log x. Now understand the difference. We have solved many questions up to this point. We have used all the 5 rules. We have this product rule, quotient rule, then rules over addition and algebra of derivatives of function basically. So we have used all the rules. Now we have used product rules, but I want you guys to understand the product rule a little better, right? So what we are doing is we're not taking product of 2 functions now. We are taking the product of 3 functions. So for example, if this question was such that y is equals to cos x into log x, and find out dy by dx. So what we would have done is we have we have used we will have to use product rule to solve this, right? And product rule says that differentiate one function at a time and take second one as it is. So this is, if you differentiate cos x, you will get minus sin x and take log x as it is, then plus take cos x as it is and differentiate log x, which is 1 by x. Now we can extend this product rule over as many functions as we want. Now consider in this case, we have 3 functions in product. We have 3 functions in product. So if I want to find out dy by dx, I can just simply extend this product rule over the product of these 3 functions. What I need to do is I'll differentiate one function at a time and take the remaining functions as a constant. So I'll first differentiate x plus 1. The differentiation of x plus 1 is 1. Now I'll take cos x and log x as it is. Plus, after first step, I'll take cos x. I will differentiate cos x this time and take x plus 1 and log x as it is. Differentiation of cos x is minus sin x. Then the next step, I will differentiate log x and take first and second function as constant. If we would have multiplied 10 functions, we will have to make 10 terms in which we will differentiate one term each time and take all other 9 terms constant. Did you guys understand this? Safa, Fahad, Abdullah, Maz, Jania, Yes. Karif, did you understand this? How to extend the rule? Yes, sir. So we can very simply extend our rule.
Okay, to product of any number of functions, we will have to differentiate one function at a time and take all others as constant, right? And we will do this as many times as we want, right? So now let's understand this question. Y is equals to ax plus b to the whole power n, right? We have to find out dy by dx in this case. Now what I can do is I can write this function as ax plus b into ax plus b into ax plus b up to basically ax plus b to the whole power n means that we are multiplying ax plus b n times. Am I correct? We are multiplying ax plus b n times. That is why we have ax plus b to the whole power n. Now in this case, when we are multiplying this n times, and I want to find out the differentiation of this, how many terms will I have in the final answer? Safa, will you tell me this? How many times do I have to differentiate using product rule? N times, correct? Or Because we will different one function and take all others as it is, right? So what we will do is, let's extend the maybe rule. a So we'll get dy as a, yeah, it should be e right correct? into ax plus b into ax plus b, it goes on How many times, Safa? into n times. Why n times? You have differentiated one. I mean, you have N differentiated minus one. Yes, you had we had n different n expressions, but we have differentiated one expression out of the n expression. So we are left with ax plus b to the whole power n minus n 1 minus. times. Yes, correct. Then in the next step, we will have this ax plus b. We will have this ax plus b, all of the ax plus b, and we will have to differentiate this. We'll have to just differentiate this. Won't it be the same, sir? Like a, Yes, it would be same. and all of this It will happen n number of times, right? n number of times, correct. Can we just multiply a into ax plus b the whole raised to n minus Bilkul, we can multiply this. 1 the whole into n? Yes. So see, this process will be repeated n times. Right? First we will differentiate ax plus b, we'll get a, and all the other ax plus b will be constant. Then we'll differentiate second one, all the other n minus 1 are constant. Then differentiate third one, all the other n minus 1 are constant. We'll do this for the n times because we have n terms. So this is basically n times, right? So this is nothing but all the terms are same. Hence, this is the final answer. You can ask me your doubts if you're facing within, if you're facing some problem with this. I think you can solve every question now. Just solve this one as well. I mean, not now, but yeah, solve it now. You have to find out the dy by dx for this. You have y is equals to sine of x plus a. You'll have to find dy by dx. Remember that you don't know the formula for sine of x plus a. I mean, you know the differentiation of sine x. The differentiation of sine x and sine of x plus a is a different thing. Do not misinterpret this.
You know the differentiation of sin x, you know the differentiation of cos x, but not for sine of x plus a. So how to do this? Path, how to solve this? How to find dy by dx for this y? Sorry, the question is just sine into x plus a. Yes, just sine of x plus a. इट्स ओके फात, ट्राई कर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो होगा। अच्छा, क्या हम ओपन कर सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस ए को? हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी का तो फॉर्मूला है ना? यस। क्या क्या होगा ओपन, बता मेरे को, क्या बनेगा भाई? sin x cos y plus cos x, sin x cos साइन a वाई, करेक्ट plus cos x sin a। करेक्ट। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और नहीं, क्योंकि कॉस ए और साइन ए जो यहाँ पे आ रहे हैं वो कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट नहीं है यार, ये अंदर चला गया साइन के। ये बाहर होता ना ए, यहाँ ना होता अगर, कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर अंदर ऐसे एक्स के साथ ए दे रखा है भाई तो प्रॉब्लम है। तो फिर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो पहले हम इसको ओपन करेंगे, लिखेंगे साइन एक्स कॉस ए, नाउ दिस कॉस ए इज अ कांस्टेंट, साइन एक्स का में आता है, प्लस cos x sin a, अगेन दिस साइन ए इज कांस्टेंट, cos x का में आता है, तो dy by dx बन जाएगा, sin x का बनेगा cos x, cos a रहेगा एज इट इज, प्लस cos x का बन जाएगा माइनस sin x, तो माइनस ही कर देता हूँ सीधा, माइनस sin x sin। क्या ये किस चीज का फॉर्मूला है, cos x cos a माइनस sin x sin a? cos x plus a। cos of x प्लस a, तो dy by dx आएगा cos of x प्लस a। अभी ये सब हम चेन रूल से भी करना सीखेंगे नेक्स्ट ईयर, अभी तो नहीं, इस साल तो नहीं। ये भी और ये भी, इनको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे रादर देन इतना लंबा जानने के, हमारे पास है इसके लिए भी फॉर्मूला, बट अभी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी पहले हमें यही अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, 5 रूल्स, इनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा एंड होता है चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अभी आप कोई भी प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं, यू हैव 5 मिनट्स, थिंक अबाउट इट केयरफुली, जो भी पूछना हो अभी पूछ सकते हो, आगे भी पूछ सकते हो, बट आगे कभी पूछते नहीं हो तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी भी जो पूछना चाहते हो यू कैन आस्क। Sir, yesterday you had given a question यस सफा, sin व्हिच x क्वेश्चन? plus cos x by sin x minus cos x. Sin x plus cos x by sin x minus cos x. यस, Sir, कैन आई what? रिमूव दिस? इज एनीबॉडी राइटिंग? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, या सफा।
So we had this sin x plus cos x upon sin x minus cos x. yeah, by sin x minus cos x. Okay. Sir, do you know what is the answer for that? Is it I don't know minus the 2 answer, but we by can sin solve 2x this, plus right? 1? Yeah. Okay. Chalo, let's solve it with me. Yeah. What should we Like write here? the sin x will be cos x. One minute, sir. Oh yeah, cos x minus sin x into Correct. sin x minus cos x Correct. minus cos x plus sin x. Yes. Yeah, either way is correct. In sin x plus cos x. The whole by sin x minus cos x the whole square. Correct. Sir, what I did here was that I took minus sign for the first two terms. I took minus sign out so that Correct. it becomes sin x minus cos x the whole square. Correct. It'll be my Can we write it here then? Can we write it like this? yes, sir. And then the same way sin x plus cos x the whole square I did Yes. by sin x minus cos x the whole square. Correct. Now see, this part will be positive and this part will be negative, but they both are same. So this will get cancelled out. Then when you open up the brackets and everything, you'll This is get 1 and this is also 1. So 1 you'll get -2, no? 2 by sin x. And then I opened the below brackets as well. Then I got Okay. minus, minus sin 2x plus 1. Yeah, 1 minus sin 2x. Yes. So always remember this. Sin x minus cos x whole square is 1 minus sin 2x and sin x plus cos x whole square is 1 plus sin 2x. Yes, sir. This will be used in integration. Yes, Tarif, we can. Which one? This one, which I have written. Yes. So Tarif, we have used quotient tool here. This is sin x plus cos x and this is sin x minus cos x. So let's take this as fx and this as gx. So we have divided by gx whole square. You know the formula for quotient rule, right? Do you know the formula for quotient rule? Or should I explain that also? I'm not sure about that formula. Okay, so quotient rule says that if you have two functions in divide, something like that, and you want to find out dy by dx for this question.
You want to differentiate this. So what you will do is you will square the denominator part, and then in numerator you will get f dash x, that is the differentiation of numerator first, into gx minus numerator as it is differentiation of denominator. That is what we have as quotient formula that we have applied here. Now what we have done is, this is fx and this is gx. So we have squared, we have taken the square of denominator, which is sin x minus cos x in this case. Then differentiation of numerator, this is sin x plus cos x. So this is the differentiation of sin x plus cos x. Differentiation of sin x is cos x and differentiation of cos x is minus sin x. तो जब हम sin x plus cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और इसको एज इट इज रखा, एज इट इज माइनस, फिर उसको एज इट इज रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया। बिल्कुल फॉर्मूला ये हमने अप्लाई किया इस पर। फिर इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बट पहले ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं। करीब हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आई गेस, तो शायद कल वाली क्लास में था नहीं, या तो हम यही कर रहे थे, यही पूरा पार्ट कवर कर रहे थे जहाँ पे हम अलजेब्रा समझ रहे थे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हम अप्लाई कर रहे थे फ्रॉम द डेरिवेटिव्स पार्ट। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी तारीफ अच्छे से, ऐसे समझ नहीं आएगा ये। हम इस पे लगा चुके हैं क्लास में एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन। चलिए जी, एनी प्रॉब्लम अगर आप पूछना चाहते हैं तो अभी भी समय, वक्त है, पूछ लीजिए। ओके, इन दैट केस वी विल मूव फॉरवर्ड। तो यार वी आर लेफ्ट विद चैप्टर्स, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, राइट। ठीक है, ये सब तो छोटा छोटा ही है, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स तो। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा है जिसमें 3-4 लेक्चर लगेंगे, 4-5 लेक्चर लगेंगे मतलब, और कॉनिक सेक्शन में भी 4 लेक्चर के आसपास ही लगेगा, ज्यादा नहीं, 3 लगेगा, 3 क्लासेस है, 3 ही लगेगा। ठीक है, जनवरी एंड तक हम ये पूरा सिलेबस आराम से फिनिश कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तुम लोगों के एग्जाम्स कब कब से हैं यार, एक बार ही मेरे को बताओगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फहद। फहद एग्जाम कब से हैं? सभी लोग चैट्स पे भी आंसर कर सकते हैं मेरे को, एक एक करके अपने एग्जाम्स की, फाइनल एग्जाम्स की डेट मुझे बताओ थोड़ा। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर मेरे को तुम लोगों से कुछ कुछ और भी चीजें पूछनी है। चैप्टर तो कर लेंगे स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो सभी लोग मेरे को अपने एग्जाम्स की डेट बता दो, और अगर आप श्योर नहीं हो तो आप बता सकते हो अनश्योर, और अगर आपके पास डेट है तो आप मुझे बता सकते हो, एक आइडिया दे दो जिससे कि मुझे पता हो कि कब तक हम लोग आराम से सिलेबस फिनिश कर सकते हैं। जैसे कि माज ने बोला 23 फेब, मुझे भी लगता है मोस्टली 11th के एग्जाम्स फेब एंड में ही होते हैं। तो अगर, तो मैं यही कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने जनवरी एंड तक हम इजीली, ओके ठीक है, दोनों का 23rd से ही है, 23 फेब से है, तो आराम से हम इजीली अपना खत्म कर देंगे जनवरी एंड तक सिलेबस, बहुत आराम से। और उसके बाद वाला मंथ में जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जिस टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ आओ, प्रैक्टिस करो थोड़े क्वेश्चंस की। देखो यार, उस 1-1.5 घंटे में आपको मेरे साथ सही से बैठना पड़ेगा जो आप क्लास लेने आओगे मुझसे, बट आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप 1.5 आवर बैठ के मेरे साथ प्रैक्टिस करो। मैं कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर दो, मैं आपको हिंट्स दूंगा, बताऊंगा, पूछूंगा, बहुत सारी बातें मेरे साथ करोगे तो हो जाएगी चीजें। तो उसके बाद जो भी ऐसा पार्ट है जो आपका क्लियर नहीं है,
यू कैन टेल मी, वी कैन हैव एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन एवरीथिंग। उसके बाद सर सब टाइम वही है, फिर तुम जो चाहोगे वो पढ़ेंगे, तो सिलेबस से मतलब नहीं होगा, जो तुम्हें नहीं आता है वो वाले पार्ट्स हम करेंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट फहद, थरीफ, जानिया? ओके, ठीक है, जस्ट इन्फॉर्म मी वंस Safa and Jania get the final date, okay? And what about Tharif and Fahad? ठीक है, कूल। तो जनवरी में मतलब नहीं है प्रॉब्लम, राइट? किसी को भी जनवरी में हम आराम से सिलेबस खत्म कर सकते हैं। हाँ, मतलब अभी हमारा हम इसमें से एक चैप्टर तो इजिली, एक नहीं दो भी हो सकते हैं, नहीं एक ही बोलो, स्ट्रेट लाइन से कर पाएंगे, यस। और फिर हम जनवरी में पूरा ये सिलेबस खत्म कर लेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी तो वो भी लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, जनवरी में ही हम पूरा सिलेबस आराम से फिनिश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी यू गाइस आर अपियरिंग फॉर टेस्ट, राइट? Just raise your hand whoever has appeared for test. I think टेस्ट चल रहे हैं ना तुम लोगों के कुछ तो? सर विश नहीं, टेस्ट नहीं चल रहे हैं तुम लोगों के कुछ? नो सर, नो एग्जाम्स? समर वेकेशन। ओके, आई थॉट तुम लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं। सर आई विल डायरेक्टली हैव माय फाइनल एग्जाम। नहीं नहीं, मैं मेरे को लगा, अच्छा, नहीं नहीं, मेरे को लगा कि सफा के पोर्टल पे कुछ टेस्ट चल रहा होगा यहाँ पे लर्निवियो में। नहीं? नो सर, नो। ओके, आई थिंक दैट इज हैपनिंग फॉर क्लास 12 ओनली अभी। बट हाँ, तुम लोगों के भी टेस्ट मेरे को कराने हैं अभी, तो अभी हम टेस्ट देंगे तो टेस्ट में हमें और क्लियरली पता चल जाएगा कहाँ पे हमारी कैसी सिचुएशन है। ओके, सो ठीक है, तो वो भी टेस्ट भी होंगे हमारे कुछ, उसके साथ साथ और ज्यादा चीजें क्लियर भी होती चली जाएंगी तुम लोगों को। मार्क्स आउट ऑफ, these marks were out of how much? अच्छा, you got full? अरे वाह, गुड, वेरी गुड, कूल। चलो then let's start with straight line. Okay, then how much did you get? Okay, okay, that is also good. बट हमें चेक कर लेना है कि जहां भी ये मार्क्स कट हो रहे हैं वहां पे क्यों, किस वजह से कट हुए हैं। किसी माइनर मिस्टेक की वजह से कट हुए हैं या कॉन्सेप्ट की वजह से कट हुए हैं, यानी कि हमें क्वेश्चन ही नहीं आता था, देन अकॉर्डिंगली हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है,
चलो देन लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइन टुडे। क्यों जी, करें स्ट्रेट लाइन से शुरू? इफ यू हैव एनी अदर चॉइस तो बता सकते हो। हम्म। Yeah. So let's start with straight lines. Now, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से बात करने से पहले मैं आपसे कुछ और बात करना चाहूंगा। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था 10th क्लास में, राइट? डू यू गाइस रिमेम्बर क्या चीजें पढ़ी थी आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? सिलेबस में तो था ना 10th में? कुछ कट हो गया था सिलेबस, रिड्यूस कर दिया था कुछ सिलेबस शायद। बट डोंट वरी, जो भी आपने पढ़ा, कैन यू जस्ट रिकॉल दैट क्विकली? क्या क्या आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था? तो एक तो पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, इफ यू रिमेम्बर। क्या होता था अगर एक पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, दूसरा पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज a, then AB distance will be root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। और क्या पढ़ा था, याद है? एक ये भी पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला, कि अगर आपके पास एक लाइन है ए बी, उसको कोई सी पॉइंट एम रेशो एन में कट करता है, और लेट से आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है, आपको बी के भी कोऑर्डिनेट पता है, तो आपको सी के भी कोऑर्डिनेट पता होंगे। तो x हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये पहला है जिसमें हम इंटरनल डिवीजन कर, दिस इज इंटरनल डिवीजन। अभी इसमें दूसरा भी लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन माने देखो ये सी पॉइंट ए बी लाइन पे आ रहा था बीच में कहीं। एक्सटर्नल डिवीजन माने कि सी पॉइंट कहीं बाहर आ रहा है ऐसे, यानी कि लाइन पे लाइन ही कर रहा, पॉइंट बाहर से डिवाइड कर रहा है। बाहर से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? वही सेम रेशियो। ये डिस्टेंस अगर m है तो ये डिस्टेंस n है। ए से सी का डिस्टेंस m है, बी से सी का डिस्टेंस n है। तो सी
अभी भी m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, और इस केस में हमारे पास x हो जाएगा mx2 माइनस nx1, यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई m माइनस n, और ऐसी y भी हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट होता है एक सेक्शन फॉर्मूले में। और यहीं पे अगर आपको याद हो तो हमने एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ा था। ये सारी चीजें आपको लिखनी है बाय द वे, काम आएंगी। याद नहीं है तो लिख लो फटाफट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर ये लाइन है, ये पॉइंट है, तो ये कहीं बीच में मिड पॉइंट है इनका। तो x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 बाई 2, y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 बाई 2। और एक लास्ट फॉर्मूला और था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपकी रिड्यूस्ड सिलेबस में था एक्चुअली, मतलब कि रिड्यूस हो गया था सिलेबस, डिलीटेड सिलेबस में था। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 MC x3 y3 इज, बता सकते हैं कोई फॉर्मूला क्या था? कोई बात नहीं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सब एडिशन में ही है, और ये पूरे पे मॉड लगा हुआ है। मॉड इसलिए क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये 5 चीजें हमें पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू स्ट्रेट लाइंस। दिस इज योर बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फटाफट राइट देम एंड आस्क मी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग।
हाँ जी, एवरीबॉडी डन? ओके, तो अभी ये था हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th, राइट? नाउ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, अभी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो यही कॉन्सेप्ट्स थे। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दूसरी ब्रांच पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये समझ लो, 10th से 11th में आने के बाद what are the changes that we encounter? पहले ये इस पे बात करते हैं। हाँ जी, तो 10th से 11th में आने के बाद चेंज ये हुआ कि अब भी हम जो पार्ट पढ़ रहे होंगे, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं बोलते हैं। ये अभी हम पढ़ रहे होंगे फिगर्स के बारे में, कि जो भी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है उसमें किस किस तरीके की फिगर्स या किस किस तरीके की शेप्स एग्जिस्ट करती है। किस किस तरीके की शेप एग्जिस्ट करती है, इस बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो पहले तो यही बात कर लेते हैं किस किस तरीके की शेप्स या किस किस तरीके की फिगर्स हमारे पास होंगी। पहली इंपॉर्टेंट फिगर होगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि कुछ इस तरीके की फिगर। दूसरी इंपॉर्टेंट फिगर होगी सर्कल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है guys। सर्कल दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट भी है, दोनों ही हम अच्छे से पढ़ेंगे भी। तीसरा होगा पैराबोला। पैराबोला इज ए यू शेप। ये यू कहीं भी हो सकता है, मैं यू को ऐसे ही नहीं कह रहा, हो सकता है यू ऐसा हो, यू ऐसा हो, बट यू शेप्ड होता है पैराबोला। देन फोर्थ विल बी एलिप्स। एलिप्स इज बेसिकली स्क्वीज्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। अगर आप सर्कल को ऐसे प्रेशर से दबा दो तो एलिप्स बन जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। एंड द लास्ट शेप विल बी हाइपरबोला। हाइपरबोला कुछ ऐसा शेप होगा, ये इस तरीके का या फिर इस तरीके का। सो दीज आर 5 फिगर्स विच विल बी स्टडीइंग इन क्लास 11th। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई नया टॉपिक नहीं होगा, ये होगा कि आपके पास फिगर्स नहीं हो जाएगी। Sir, in ठीक coordinate है, system, we'll be learning this. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही पार्ट है सफा, Sir, बट we'll be यस यस, learning this in coordinate system. एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री अब हमारा कुछ चैप्टर नहीं बचा है। जो 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना, ये उसी का एक्सटेंशन है। Okay. स्ट्रेट लाइंस और कॉनिक सेक्शंस दोनों। Okay, तो sir. स्ट्रेट लाइन हो, कॉनिक सेक्शन हो, ये दोनों ये सारी चीजें इनफैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड है। एज इन कि ये फिगर्स जो बन रही होंगी आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही बनानी होंगी। अब आपको ये समझना है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा, एक तो आपको ये फिगर्स के बारे में बता दिया गया,
But the important part is to connect algebra with coordinate system. जब हम अलजेब्रा को कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक नई ब्रांच ओपन हो जाती है which is known as analytical geometry. Analytical geometry. Now, what does analytical geometry says? That it will use algebra plus coordinate geometry. It will use algebra as well as coordinate geometry to define some figures. To define some figures. ये हमारा काम होगा एक्चुअली. तो हमें देखना है कि अलजेब्रा को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, और इस कनेक्शन को हम इक्वेशंस के थ्रू सीखेंगे. बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि फिगर तो ठीक है यार, आपको बता दिया गया सर्कल ये होता है, पर आपको और क्या पता है सर्कल के बारे में. हमें सर्कल की इक्वेशन पता होगी, यानी कि एक रूल जिसके थ्रू सर्कल बना है या एक रूल जिसके थ्रू स्ट्रेट लाइन बना है, तो वो सब इक्वेशंस हो. तो हमें इन 5 फिगर्स के बारे में पढ़ना होगा. ये 4 फिगर्स तो कॉनिक सेक्शन के अंदर आ जाएंगी, और ये अलग से चैप्टर है स्ट्रेट. ठीक है, तो अभी हम आज स्टार्ट कर रहे होंगे स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले जो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं वो हमें पता होनी चाहिए अच्छे से. हमें डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, हमको डिस्टेंस के साथ साथ सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पता होना चाहिए अगर उसके वर्टिसेस गिवन हो तो. Now let's start with the first figure, straight line. Can I remove this? If someone hasn't written, just raise your hand. Cool. तो स्ट्रेट लाइंस कहता है सबसे पहले तो आपको पता है स्ट्रेट लाइंस कैसी होती है, बट स्ट्रेट लाइंस कहता है कि कोई भी ऐसी फिगर जिसका स्लोप चेंज ना हो, एनी फिगर विद अ कांस्टेंट स्लोप इज नोन एज अ स्ट्रेट लाइन. ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बट सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा स्लोप क्या है. स्टार्ट हमें यहां से करना पड़ेगा. व्हाट इज स्लोप? तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा स्ट्रेट लाइन के अंदर वो होगा स्लोप ऑफ अ लाइन. नो, पहले मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा देता हूँ स्लोप का, विच इज इजी. स्लोप हमें बताता है बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में कहूँ मैं, स्लोप होगा हमारा एंगल मेड बाय अ लाइन with positive x-axis. In fact, sorry, tangent. मुझे ऐसे लिखना चाहिए टेंजेंट ऑफ नो टेंजेंट मींस tan. जो आपने tan sin cos tan वो सब पढ़े थे, उसमें टेंजेंट tan के लिए यूज होता है. सो टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव x-axis. और अगर दूसरी भाषा में मैं इसको और आसान शब्दों में समझाऊं तो ये होता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. इट रिप्रेजेंट्स इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. जस्ट represents inclination of a line. Represents slope of line represents the inclination of that line. कितना झुकी हुई है लाइन.
ये बताता है हमें स्लोप। तो सिंपल सिंपल भाषा में तो ये बात है। चलो अब इसे समझते हैं एक बार। तो लेट्स से हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ये एक लाइन है। ओके, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो ये लाइन बनी, देखो इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बोलने का ये मतलब है कि आप हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से ही एंगल देखोगे कितना बन रहा है। मतलब ये लेफ्ट वाला पार्ट एक्स एक्सिस के साथ तो ये दो एंगल बना रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी, बट आप हमेशा राइट वाला, ये इधर वाला पार्ट देखोगे पॉजिटिव वाली साइड से। तो लेट्स से ये एंगल है कुछ थीटा, ठीक है। दिस इज योर लाइन, दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, लेट्स से दिस लाइन इज एल, आप उसको m से दिखा सकते हैं। m जनरली एक सिंबल होता है जो स्लोप के लिए रिप्रेजेंट होता है। रिप्रेजेंटेड एज m। m एक सिंबल है जो स्लोप के लिए रिप्रेजेंट होगा, और m की वैल्यू होगी tan थीटा। तो अगर हमारी लाइन कोई एंगल बना रही है थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। अभी स्लोप के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पहले तो आप ये समझिए, दिस इज जस्ट द फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी बेसिक फॉर्मूला फॉर स्लोप। We have many formulae, but this is the basic one. Most basic formula for slope is कि अगर आपको लाइन का एंगल पता है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा। बहुत ही सिंपल। और ये जो थीटा होगा, ये भी एक बात ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 0 से लेके 180 के बीच में ही होगी। 0 के बराबर हो सकती है, 180 के बराबर हो सकती है, इससे बड़ी या छोटी नहीं होगी। चलिए पहले फटाफट से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा। Guys, you try these two questions. I'm giving you two questions. Just try them out. I'm telling you the angle. Okay, I'll help you with the angle. You have to find the slope for L1. You also have to find the slope with L1 L2, दोनों के लिए स्लोप निकालो, मेरे को चैट पे भेजो।
No, Maz. No, not 1/√3. Correct, Safa. And second one is wrong. Maz correct है. तो पहले वाले में यार देखो हमने ये वाला एंगल दिया बट हमें ये वाला नहीं ये चाहिए. स्लोप निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए, राइट? तो ये वाला एंगल चाहिए. तो ये वाला एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 है, ये 120 है, तो ये 60 होना चाहिए. तो L1 का स्लोप होगा tan 60. बस tan 60 की वैल्यू निकाल लो, √3. अभी ये L2 में मुझे ये 60 दिया हुआ, मुझे ये एंगल नहीं चाहिए बट मेरे को ये वाला चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से. ये 120 होना चाहिए फिर. भाई पूरी एक्स एक्सिस तो 180 की होगी ना. तो इसका स्लोप tan 120 डिग्री which is minus tan 60 degree which is minus √3. करेक्ट है मज. तो इस तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं अगर हमें एंगल पता है. हो सकता है मैं हर बार इतना आसानी से एंगल ना दिया गया हो, कुछ अलग तरीकों से दिया गया हो. जैसे कि एक और एग्जांपल में लेना चाहूंगा. एल थर्ड एग्जांपल है ये. इसका स्लोप बताइए मेरे को. ये वाला एंगल 30 दिया है. लेट्स से लाइन है L3. व्हाट इज द स्लोप फॉर L3? तारीफ गलत है. Sir, L2 is negative √3. गुड वन सफा. इट्स करेक्ट. Sir, सफा इट्स करेक्ट. गुड. तो गाइस हमें ये वाला एंगल चाहिए, तब हम स्लोप निकाल पाएंगे. इफ दिस इज 30 दिस हैज टू बी 30 वर्टिकली ऑपोजिट. नाउ इफ दिस इज 30 दिस इज 90, तो ये हो जाएगा इन दोनों का सम 120. या तो ऐसे देख लो, या फिर ये 30 तो ये 60 और ये 60 तो ये 120. तो इसका स्लोप होगा tan ऑफ 120 डिग्री विच इज अगेन माइनस √3. तो ऐसा हो सकता है कि आपको सीधा सीधा एंगल ना दिया हो, आपको एंगल कुछ घुमा फिरा के दिया हो. अगर ऐसा केस है कि एंगल थोड़ा घुमा के दिया गया है, तो इन ऑल सच केसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एंगल यू नीड टू फाइंड. ठीक है. तो एक तरीका हुआ, मेरे को एंगल दिया जाएगा, है ना, और मुझसे स्लोप पूछा जाएगा. ठीक है. अब एक दूसरा तरीका समझते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एंगल ना दिया जाए.
और बजाय एंगल देने के they'll provide us 2 points through which a straight line is passing. Then also we can find out the slope. So this was A part. ऐसे मान लो. Can I remove this? Okay. So B part is slope of a line when points are given. तो let's say ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है, हमें पता है. एक ये है A पॉइंट जो है x1 y1 और एक है कोई B पॉइंट जो कि है x2 y2. तो स्लोप ऑफ AB, जिसको हम m ऑफ AB भी बोल सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, वो होगा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. चेंज इन y यानी कि y2 माइनस y1 कितना चेंज y में हुआ डिवाइडेड बाई कितना चेंज x में हुआ. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है. That is how we can find out the slope as well. So let's say, for example, find the slope of a line. Find the slope of a line which passes through guys, find out these slopes. अप्लाई करो फॉर्मूला. किसी को भी x1 किसी को भी x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 ले सकते हो. इस स्लोप को आप ऐसे भी लिख सकते हो y1 माइनस y2, बट इन दैट केस आपको x1 माइनस x2 ही करना पड़ेगा. जहां से y, जैसे y घटा रहे हो वैसे ही x घटाना है. चलिए जी, सबके स्लोप फाइंड आउट करिए फटाफट. 4 हो गए.
Mass third one is incorrect. All others are correct. Okay, so slope of this will be 3 minus 1. Slope will be what? Change in y. Change in y will be 3 minus 1 divided by 2 minus 3. किसी में से भी किसी को भी माइनस कर सकते हो, बट ध्यान रखना है कि जैसे भी y को माइनस कर रहे हो वैसे यू विल हैव टू माइनस फॉर x ना. ऑलवेज रिमेंबर दिस. बस अभी इस केस में देखते हैं, तो y वाले को माइनस करते हैं, तो 3 minus 1 divided by 2 minus 3. Okay? और इन दैट केस हमारे पास जो स्लोप मिलेगा वो मिलेगा 3 minus 1 is 2 divided by minus 1 which is minus 2. ऐसे इसके लिए निकालते हैं, तो 3 minus 0 divided by 4 minus 0, 3/4 आएगा. किसी में से भी किसी को भी माइनस कर दो, अपने अकॉर्डिंग करो जिससे कैलकुलेशन कम मिले. 4 minus 1 divided by minus 1 minus of minus 1. So this is 3/0. Basically not defined. और अगर इस वाले की बात करते हैं तो 5 minus 5 divided by 0 minus 4. 0 by minus 4 again 0. तो एक स्लोप आया -2, एक आया 3/4, एक आया नॉट डिफाइंड और एक आया 0. राइट. इस तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं जब भी हमें पॉइंट्स गिवन होंगे लाइन के. Now solve this question. Come to exercise 9.1. I'll give you first of all some questions in which you have to find the slope. Solve question number 7 first. Question number 7th and question number 10th. Page number 212. Page number 212. Question number 7th and question number 10th solve करना है. चलिए जी शुरू हो जाइए.
Question 7th is minus root 3. Okay. So let's discuss these two questions first. So 7th is find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise, right? So it's a line like this, and we have angle 30 degree with the positive direction of y-axis. Okay, positive direction of y-axis measured anti-clockwise. Anti-clockwise means this angle. So we are given that this angle is 30, right? This is 30 degree. And we have to find out the slope of this line. So again, this is the same question which we have already done. This is 30, then this is 60, then this is 120. So the slope of this line's slope should be equal to tan of 120 degree, which is nothing but minus root 3, right? So the answer for 7th is minus root 3. And coming to the 10th question, the slope of a line, find the angle between x-axis and the line joining points. So we are given points and we have been asked about the angle. If we know the points, right? So we know 2 points, 3, -1 and 4, -2. Safa, can we find out the slope in this case? So, yeah, she What was, is yeah, slope? I used the formula y2 minus y1 by x2. Yes. I got And minus, slope can also be defined as tan theta, right? sorry, Slope can also be defined as tan theta. No? yeah, So we can actually compare tan theta with the slope. The slope would be -1 minus of -2 divided by 3 minus 4. It should be equal to the tan theta. It means that this is 1 divided by -1 means -1. So tan theta is -1. So basically theta is 135 degree. That is what asked in the question. Must we have to tell the angle. So angle should be theta, na? The slope should be -1. That is correct. But we have to tell the angle. Guys, did you get it? Maz, Safa, Tharif, Abdullah. yes, sir. Okay. Okay. Then we'll move on to the next topics in the next class. We'll try to cover